सभी को नमस्कार। आज हम मई 2025 के एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स देखेंगे, समझेंगे और दिमाग में फिट कर लेंगे, जिसमें हम 44 एमसीक्यूज कवर करेंगे, जो कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पर बेस्ड है। आप हर क्वेश्चन पर वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। ये सेल्फ असेसमेंट, इवैल्यूएशन और क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो बिना किसी देरी के शुभारंभ करते हैं। Which of the following gases is not included under the Kyoto Protocol's basket of greenhouse gases? क्योटो प्रोटोकॉल ट्रीटी के अंडर इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस को लिस्ट नहीं किया गया था या इंक्लूड नहीं किया गया था? तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है और इसको क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर भी इंक्लूड नहीं किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) recently implemented by the European Union primarily targets A. Exporters of carbon-intensive goods to Europe. B. European domestic carbon emitters. C. Only oil importing nations. D. Developing countries renewable subsidies. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, that is exporters of carbon intensive goods to Europe. The Loss and Damage Fund under the UNFCCC framework aims to, इसमें UNFCCC का मीनिंग है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको 1992 में एडॉप्ट किया गया था। तो इसमें पूछा है कि जो लॉस एंड डैमेज फंड है यूएनएफसीसी के अंडर, इसका एम क्या है? सो ऑप्शन नंबर ए है प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर क्लाइमेट इंड्यूस्ड डैमेज इन वल्नरेबल कंट्रीज। बी फंड कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी इन डेवलप्ड नेशंस। सी सपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन इन G20 कंट्रीज। डी फाइनेंस बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट प्रोजेक्ट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, that is provide financial support for climate induced damage in vulnerable countries. In India, perform, achieve and trade PAT scheme is implemented by. So PAT scheme किसके द्वारा implement की गई है? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ कोल, बी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, या फिर डी दैट इज नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अगला देखते हैं। द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? ऑप्शन नंबर ए WHO, बी वर्ल्ड बैंक, सी UNEP, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, that is Health Effects Institute. Which of the following correctly describes the life mission? Life mission बोले तो lifestyle for environment mission. Option number A incentivizes industries for energy transition. B promotes environmentally sustainable lifestyle choices. C provides livelihood to forest dwellers. D supports afforestation in degraded lands. उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रमोट्स एनवायरमेंटली सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चॉइसेस। मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, दैट इज MAC, is an initiative led by ऑप्शन नंबर ए UAE एंड इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी इंडिया एंड फ्रांस, सी ब्राजील एंड नॉर्वे, और डी ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज UAE एंड इंडोनेशिया। सो ये एक इनिशिएटिव था जो कि UAE और इंडोनेशिया के द्वारा लिया गया। द इकोसिस्टम सर्विसेज वैल्यूएशन फ्रेमवर्क रिलेट्स टू ए प्रमोटिंग कार्बन मार्केट्स, बी estimating GDP based on resource depletion, C assigning economic value to ecological functions, or D
Classifying protected areas. So the right answer is option number C, that is assigning economic values to ecological functions. Next है, which of the following statements regarding blue carbon ecosystems is there are correct? They include mangroves, seagrasses, and salt marshes. They store more carbon per unit area than tropical forests. Their degradation leads to methane emissions only. Select the correct answer. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज जो तीसरा है देयर डिग्रेडेशन लीड्स टू मीथेन एमिशन ओनली, ये गलत है आपका. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. Project Dolphin aims to conserve which of the following species? A. Gangetic and marine dolphins. B. Irrawaddy and bottlenose dolphins only. C. Dugongs and dolphins. Or D. Marine turtles and dolphins. So the right answer is option number A. Gangetic and marine dolphins. So इन्हीं को कंजर्व करने के लिए हमने प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया था. The Green Credit Program launched by the Government of India is administered by, किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया गया है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को? So आपके ऑप्शंस है A. RBI, B. Ministry of Finance, C. नीति आयोग, या फिर D. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, that is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Which among the following regions recently received a UNESCO Global Geopark tag? इनमें से किस रीजन को यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क टैग मिला है? ऑप्शन नंबर ए शिवालिक हिल्स, बी सतपुरा बायोस्फीयर रिजर्व, सी मौमलू मौसमाई रीजन मेघालय, और डी ग्रेट निकोबार आइलैंड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अगला देखते हैं. The National Clean Air Program (NCAP) aims to reduce PM 2.5 and PM 10 concentrations by, यहाँ पर PM का मीनिंग है particulate matter which are tiny particles of pollution in the air, और यहाँ पर 2.5 और 10 जो है इसका डायमीटर्स है. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, that is 40% by 2026 over 2017 levels. ये एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये इसमें अगर आप ईयर याद रखते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं. बेसल कन्वेंशन डील्स विथ ए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बी ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, सी एंडेंजर्ड स्पीशीज ट्रेड, और डी persistent organic pollutants. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, that is transboundary movement of hazardous wastes. The Montreal Protocol primarily targets A. Ozone depletion substance, B. Greenhouse gas emissions, C. Heavy metal pollution, और D. Ocean acidification. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, that is ozone depleting substances. अगला देखते हैं. The Plastic Waste Management Amendment Rules 2022 introduced which key measure? Option number A, plastic neutrality certificates, B, ban on identified single-use plastic items, C, carbon offset tradability, और D, plastic import liberalization. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैन ऑन आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स. लेकिन फिर भी हम जब भी दुकान में जाते हैं प्लास्टिक की थैली यूज करते हैं. इंडियन बायो रिसोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क IBIN serves as a climate finance platform, a digital repository for biodiversity data,
a gene editing research facility, or a coastal vulnerability database? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए डिजिटल रिपोजिटरी फॉर बायोडाइवर्सिटी डेटा. The Great Indian Bustard is listed as A. Critically endangered in the IUCN Red List, B. Endangered under CITES Appendix 2nd, or C. Vulnerable under the Wildlife Act Schedule 2nd, or D. Near threatened globally. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड in the IUCN Red List. As mentioned in recent climate negotiations, the Global Stocktake (GST) under the Paris Agreement is a process conducted every 5 years to rank countries by emission intensity, B. Enforce emission reduction penalties, assess collective progress of all parties, or D. Amend the Paris Agreement targets. So इसका right answer है to assess collective progress of all parties. The IPCC was established jointly by IPCC meaning Intergovernmental Panel on Climate Change. Option number A, GEF and World Bank, B, UNDP and UNFCCC, C, UNEP and WMO, or D, FAO and WHO. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ. इसका फुल फॉर्म क्या है? यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. डब्ल्यूएमओ मींस वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. आगे बढ़ते हैं. बोन चैलेंज रिलेट्स टू ए फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, B. Marine litter reduction, C. Renewable energy targets, और D. Air pollution monitoring. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन. The Energy Conservation Amendment Act 2022 introduced provisions for option number A. Carbon credit trading scheme, B. Ban on coal-based plants, C. Creation of solar cities, D. Hydrogen production subsidies. So इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम. अगला है आपका द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) was established under A. Wildlife Protection Act 1972, B. Environment Protection Act 1986, C. National Green Tribunal Act 2010, और D. Forest Conservation Act 1980. अब ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज द आर्टिक काउंसिल डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मेंबर. सो आर्टिक काउंसिल का इनमें से कौन मेंबर नहीं है? ए रशिया, बी इंडिया, सी कनाडा, डी यूनाइटेड स्टेट्स. ये तो आपको पता होना ही चाहिए. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बिकॉज इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द आर्टिक काउंसिल. The Chipko movement was primarily aimed at A. Regulating timber trade, B. Promoting social forestry, C. Opposing displacement of tribals, D. Preventing commercial deforestation. So the right answer is option number D, that is preventing commercial deforestation. Next is polluter pays principle is incorporated under which Indian law?
सो उसको किस इंडियन लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट किया गया था? ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 और डी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसका आंसर भी बहुत ऑब्वियस है, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। The National Adaptation Fund for Climate Change NAFCC is managed by A. NIBARD, B. RBI, C. Niti Aayog, or D. World Bank. So the right answer is the National Adaptation Fund for Climate Change is managed by National Bank for Agriculture and Rural Development. So that is option number A. Eco-sensitive zones ESZs are notified under which act? A. Biodiversity Act 2002, B. Forest Conservation Act 1980, C. Wildlife Protection Act 1972, or D. Environment Protection Act 1986. So the right answer is again the Environment Protection Act 1986. That is option number D. The Perform, Achieve and Trade PAT scheme is linked with A. Energy efficiency in industries, B. Carbon sequestration in forests, C. Waste management, or D. Renewable energy credits. So the right answer is option number A, that is the energy efficiency in industries. The Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary recently became India's first A. Translocation site for cheetahs, B. Ramsagar site in central India, C. Elephant corridor, or D. Desert ecosystem reserve. So the right answer is option number A, that it became India's first translocation site for cheetahs after Kuno. Okay. The Ramsagar Convention is related to A. Coral reef protection, B. Wetland conservation, C. Desertification control, or D. River pollution abatement. So right answer is option number B, that is wetland conservation. Global Environment Facility GEF serves as a financial mechanism for option number A, UNFCCC, CBT and UNCCD. Option number B, Paris Agreement alone, C, WTO and IMF, or D, UNEP exclusively. So the right answer is option number A, that is UNFCC, CBD and UNCCD. UNFCCC तो आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है. CBT का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और UNCCD है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट desertification. The Ocean Decade 2021 to 2030 is proclaimed by A. Intergovernmental Oceanographic Commission, B. G20, C. World Bank, और D. United Nations. So ये जो 2021 से लेकर 2030 तक का डिकेड है, इसको डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला गया है. So ये किसके द्वारा प्रोक्लेम किया गया है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. REDD plus mechanism deals with A. Reducing emissions from deforestation and forest degradation, B. Removing sulfur from fossil fuels, or C. Carbon sequestration in oceans, or D. Banning agricultural residues burning. So इसका आंसर सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिकॉज दैट इज ओनली द फुल फॉर्म ऑफ दिस
REDD plus. That is reducing emissions from deforestation and forest degradation. Fly ash management in India is governed under A. Environment Protection Act 1986, B. Air Prevention and Control of Pollution Act, C. Solid Waste Management Rules, or D. National Green Tribunal Act. So the right answer is option number A again, that is Environment Protection Act 1986. The net zero emissions by 2070 target for India was announced at A. COP21 Paris, B. COP28 Dubai, or C. COP26 Glasgow, or D. COP27 Sharm el Sheikh. So the right answer is option number C, that is COP26 Glasgow. COP stands for Conference of the Parties. It comes under UNFCCC. So 26th was held in Glasgow, UK, जिसमें ये टारगेट डिसाइड किया गया था. The India Cooling Action Plan ICAP aims to A. Reduce cooling demand and refrigerant emissions, B. Promote solar rooftop cooling units, C. Provide subsidies for AC manufacturing, or D. Ban hydrofluorocarbons. Right answer is option number A, that is reduce cooling demand and refrigerant emissions. अगला देखते हैं. Ozone depleting substances ODS are primarily regulated by A. Basel Convention, B. Montreal Protocol, C. Stockholm Convention, or D. Minamata Convention. So the right answer is option number B, that is Montreal Protocol. Next is the National Mission for Clean Ganga NMCG functions under which ministry? Option number A, Ministry of Agriculture, B, Ministry of Environment, C, Ministry of Urban Development, or Ministry of Jal Shakti. So the right answer is option number D, that is Ministry of Jal Shakti. Biodiversity Management Committees, BMCs, are formed at A. Local body level under the Biological Diversity Act, B. State government level under Ministry of Environment, Forest and Climate Change, or C. District level committees under Forest Act, or D. Gram Sabha under the Wildlife Act. So the right answer is option number A, local body level under the Biological Diversity Act. Stockholm Plus 50 conference focuses on A. Marine resource mapping, B. Accelerating global environmental governance, C. Climate finance for least developed countries, or D. Plastic waste recycling. So the right answer is option number B, that it focuses on accelerating global environmental governance. Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary lies along which river? A. Godavari River, B. Betwa River, C. Chambal River, or D. Mahanadi River. So the right answer is option number C, that is Chambal River. Forest Conservation Amendment Act 2023 introduced which major change? A. Redefined forest and expanded exemptions for strategic projects. B. Increased penalties for illegal felling. C. Centralized forest management under Ministry of Environment, Forest and Climate Change, or D. Introduced forest carbon credit trading. So the right answer is option number A, that it redefined forest and expanded exemptions for strategic projects. Ecomark scheme in India certifies A. Sustainable mining sites,
बी इंडस्ट्रियल वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट, और सी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, डी environment friendly consumer products. So the right answer is option number D, that is environment friendly consumer products. The pollution load index PLI measures A, urban heat island intensity, B, water use efficiency of industries, C, the cumulative effect of multiple pollutants in an area, और डी ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन एयर। ये आपको करना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका भी राइट आंसर होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। मैंने पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है या कोई करेक्शन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई वुड अप्रिशिएट दैट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।